हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। सो फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्टिकल 12 to 35 and which is also known as the Magna Carta of the Indian Constitution. The fundamental rights were included in the Constitution because they were considered essential for the development of the personality of every individual and to preserve the human dignity. Human rights are the rights that a human being needs to survive with respect and freedom. So the fundamental rights include only those rights which are basics to normal life. All people, irrespective of the race, religion, caste or sex, have been given the right to move to the apex court of the country, that is the Supreme Court, and the respective high courts for the enforcement of the fundamental rights. So we are having the 6 fundamental rights. They are from the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to property, and right to constitutional remedies. But this right to property was also included in the fundamental right originally, but however by the 44th Constitutional Amendment Act 1978 it was deleted from the list of fundamental rights and made a legal right under the Article 300A in Part 12 of the Indian Constitution. So now we are having only 6 fundamental rights in the Indian Constitution. So some important articles related to fundamental rights are given in the Article 12 and Article 13. So Article 12 that deals with the definition of the state, and Article 13 deals with the laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Now comes the fundamental rights which start from the right to equality जो 14 से लेके 18 आर्टिकल्स में mentioned है. Article 14 डील करता है equality before law. आर्टिकल 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 डील करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 डील करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल से. Now comes the next fundamental right, that is the right to freedom. Article 19 जो डील करता है protection of certain rights regarding 6 rights, और वो 6 rights है right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully and without arms, right to form association or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. So ये सारे 6 rights आर्टिकल 19 में mentioned है. Now the next आर्टिकल जो right to freedom में mentioned है आर्टिकल 20 जो डील करता है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. आर्टिकल 21 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21A डील करता है राइट टू एजुकेशन. आर्टिकल 22 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. नाउ द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट दैट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो डील करता है आर्टिकल 23 एंड 24 से. सो आर्टिकल 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. Now the next fundamental right is right to freedom of religion जो आर्टिकल 25 से लेके 28 में mentioned है. So the first article of right to freedom of religion is article 25 जो deal करता है freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. यहाँ पे 3 P's है profession, practice and propagation. Now the next article is article 26 जो deal करता है freedom to manage religious affairs. This article is article 27 जो deal करता है freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion. And the next article is article 28 जो deal करता है freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. Now the next fundamental right is cultural and educational rights. यहाँ पे 2 articles है article 29 and article 30. So article 29 deal करता है protection of interest of minorities. Then article 30 deal करता है right of minorities to establish and administer educational institutions. और जो आर्टिकल 31 है वो रिपील हो चुका है. सो द नेक्स्ट इज़ सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज. यहाँ पे 3 आर्टिकल्स है आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C. सो आर्टिकल 31A डील करता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडेड फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा. आर्टिकल 31B डील करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. एंड आर्टिकल 31C डील करता है सेविंग ऑफ लॉज गिवन इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स.
सो नाउ द लास्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो डील करता है आर्टिकल 32 से लेके 35 तक. सो द आर्टिकल 32 डील करता है रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. आर्टिकल 33 डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा. Article 34 deal करता है restriction on rights conferred by this part while martial laws is in force in any area. And last article, Article 35, जो deal करता है legislation to give effect to the provision of this part. So that's all regarding the fundamental rights that are mentioned in part 3 of the Indian Constitution. Hope this video was helpful to you. Thank you so much everyone.